बेसिक रेडिकल्स अ डिफरेंट अप्रोच पार्ट 3 आपके सामने है। अभी तक हमने जो दो पहले पढ़े हैं, पहला और दूसरा हिस्सा, इसमें हमने फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप तक की स्टोरीज पढ़ ली हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स कौन से हैं और उनके एनालिसिस की स्कीम क्या है। मैं हूं सौरभ मुक्तिबोध। चलते हैं इस वीडियो में आगे। एजेंडा स्लाइड बताती है कि scheme of analysis of fourth group radicals is the agenda for this particular course. So, qualitative analysis of fourth group radicals. Let us find out what are the radicals in this group. So, we have a group, then the radicals, then the group reagent and this compound solubility. This is how the things would look like. So, if you have fourth group, the cations are aluminum, zinc, chromium, tin, and arsenic in their states 2 and 4 and 3 and 5. So these are the radicals: aluminum, zinc, chromium, tin, and arsenic. And as I told you earlier, that if you apply a bit of common sense, you will find that many of them have an amphoteric behavior. Plus, they can be oxidized to their higher oxidation state by a suitable oxidizing agent. तो इनमें अल्कली के द्वारा एम्फोटेरिक बिहेवियर होने के कारण इसको आगे हम इस तरीके से ले सकते हैं कि यदि हम इसमें NaOH मिलाएं और पेरोक्साइड मिलाएं तो ये इसका ग्रुप रीजन बनेगा। एंड द हाइड्रोक्साइड्स दैट आर फॉर्म्ड आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर बट आर डिसॉल्व्ड इन द एक्सेस ऑफ अल्कलीज। सो द ग्रुप रीजन ऑफ दिस ग्रुप इज 6m solution of NaOH in presence of 3% solution of H2O2. Under the action of the group reagent, at first, the precipitates of hydroxides are formed. They are dissolved in NaOH axis. The presence of H2O2 stipulates formation of hydroxoanions and oxoanions of these elements at the highest rates of oxidation. At the same time, the cation of 5th, 6th analytic groups are precipitated as oxohydroxides, but hydroxoanions and oxoanions of the 4th group radicals remain in the solution. These anions are capable of hydrolysis, but in different degrees. This property is used in systematic course of analysis for separation of aluminum hydroxo and tin hydroxo ion as appropriate hydroxides. So this is all the chemistry for this group radicals. Let's move forward. If we have a mixture of arsenic, tin, aluminum, chromium and zinc, we can go by our group reagent method. यहाँ हम NaOH और पेरोक्साइड यदि मिलाते हैं तो हमको आर्सेनिक जो +3 में है वो +5 में ऑक्सोनायंस में जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन अल्कलाइन है। टिन हाइड्रोक्सो एनायन बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्रोमियम +3 में है, क्रोमियम +6 में क्रोमेट के येलो सॉल्यूशन के रूप में जाएगा। जिंक चूंकि अपना वैलेंस शेल 4 तक एक्सपांड कर सकता है, so you get a zinc hydroxoanion, zincate ion in a solution state. And similarly, aluminum can expand its valence shell up to 6, so you have ALOH whole cycle, which is actually equivalent to soluble metaaluminate species. तो ये एक्शन है NaOH के साथ और पेरोक्साइड के साथ। आर्सेनिक +3 +5 में भी हो तो आर्सेनेट एनायन क्योंकि मीडियम अल्कलाइन है। टिन अगर +2 में भी हो या 4 में भी हो तो भी +4 में एक स्टेबल स्पीशीज बनाता है। क्रोमेट बनेगा इधर क्रोमियम का। जिंक और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक स्वभाव के कारण सॉल्युबल्स कंपाउंड बनाएंगे। इसके अलावा यदि इसी सॉल्यूशन में जिंक HCl की उपस्थिति में मिलाया जाए तो वी एक्सपेक्ट टॉक्सिक गैस आर्सीन टू बी प्रोड्यूस्ड। आर्सीन एक जहरीली गैस है, टॉक्सिक है, और यदि इसमें हम HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलाएं तो हमको एक येलो कंपाउंड AS2Hg3 composition का प्राप्त होता है. That is a test for arsenic. So that arsenic can be identified in a very different mode. Even if we put silver nitrate into a solution of the gas which is coming out arsine, then AgNO3 is reduced to metallic silver that gives black precipitates. So arsenic can be identified in a very separate mode.
So that is not a point of discussion here. Arsenic can be identified in isolation as well. Now we have got these species and we need to identify them. So how do we proceed? Let's find it out. In this method, well, we have 1, 2, 3, 4, and 5 radicals where arsine and arsenic has already been identified. What we do is we simply treat this with a solution of ammonium chloride. Here we are adding a saturated solution of ammonium chloride that has not been explained. But when you put ammonium chloride, that would cause enough acidity so that aluminum goes to hydroxide and tin also goes to hydroxide in the form of yellow precipitate, because aluminum hydroxide is gelatinous, tin hydroxide may be yellow, but then they are going to superimpose each other. However, ammonium chloride is not going to change the fate here. Zinc goes to a tetramine complex, chromate remains as such, and arsenic remains as such. So we are now left with aluminum and tin in a yellow state of solution. So let's proceed further. With this concept, when you have in yellow, you put some HCl that makes all the things soluble, and you get aluminum and tin chlorocomplex, hexachlorostenate complex. And with this, we have to put some alizarin, which is a very typical reagent for identification of aluminum, so that converts aluminum varnish. And to the same solution, if I add Fe, then tin plus 4 स्टेट में अगर है तो वो टिन को +2 स्टेट में लेके आएगा रिडक्शन से, और जब टिन +2 में आ जाता है तो हमको पता है कि एक सुटेबल रीजेंट है मर्क्यूरी क्लोराइड। जब Hg2+ की टेस्ट लगाना हो तो हम SnCl2 मिलाते हैं, जब Sn की टेस्ट लगाना है तो हम HgCl2 मिलाते हैं। तो हमारी इस रिएक्शन में HgCl2 से मेटालिक मर्करी इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इस तरीके से ये बात खत्म हो गई है हमारी एक तरफ की, जहां हमारे पास 2 रेडिकल थे और हमने उनको आइडेंटिफाई किया है। अब हमारे पास में फिर से हम वहां आए, यहाँ हमने 2 भागों में देखा था। अमोनियम क्लोराइड मिलाने से हमारे पास 3 सॉल्यूशन स्टेट में थे, आर्सेनेट, क्रोमेट और जिंक अमीन कॉम्प्लेक्स, जबकि हमको एक येलो रेसिड्यू मिला था एल्यूमिनियम और टिन हाइड्रोक्सो कंपाउंड का। यहाँ तक का एनालिसिस हमारा हो चुका था। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस that is what you call as the solution of arsenic, chromate and zinc amine. Now chromate is there in the solution state, so it's making a yellow solution. Arsenate is not going to interfere. Arsenic has already been identified by arsine gas and by many other methods that we have demonstrated earlier. So this part is over. Now we are heading towards this part. Let's proceed. How does it do it? So we have now 3 radicals. What we do is we simply add some specific reagent that is known as dithiazone in chloroform and acetic acid. A very typical test of zinc dithiazone, a precipitate of zinc dithiazone is formed, while potassium ferrocyanide, if we add, then your bluish white precipitates of a complex that contains K2, Zn3, FeCN6 species are formed. As far as the chromate ions are concerned, they can be identified by adding barium ions or lead ions in the form of corresponding chromates would be generated, and arsenic has already been confirmed in the earlier stage. Now here, because the medium is now slightly alkaline earlier, they will remain in the solution. So that's a very typical chemistry of the radicals that we have taken for consideration. That's all for now. Thanks for watching this video.